अल्लाह, तो जैसे हम गोवा जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है बेटे, ठीक ठाक जाओ, राजी खुशी जाओ। देखो ये हमारी खाला है, तो ये बोल रही है कि हम लोगों को सब ठीक ठाक जाना है। अभी हम आसिफ भाई का विचार वो लेते हैं कि क्या करना है। गोली नहीं दिखानी है, ये बताओ कैसे करना है। बहुत मजा आएगा। और हमारे राकिब भाई, जैसे हम लोग जा रहे हैं, तो आपको क्या कैसा लग रहा है कि कितनी मस्ती होगी वहाँ पे? धूम मचा देगा। और अभी हम मिलते हैं अपने द मोस्ट एंड द पावरफुल पर्सन मिस्टर अमजद अली। यो ब्रो, ये हमारे अमजद भाई हैं। अभी बताएंगे कि गोवा में हम कहाँ कैसे कैसे जा रहे हैं। So we are going heading towards Goa, Baga Beach, उसके बाद फोर्ट और दूध सागर। ओके, सो द फर्स्ट प्लान हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो है गोवा, एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ आवर डे, डे 1। वी आर लीविंग फ्रॉम बैंगलोर टू गोवा। दिस इज माय फैमिली। Hey guys, he is my little brother who is the biggest among all of us. ये सबसे बड़े, सब बीच में आते हैं मेरे से बड़े, और वो अंदर जो बैठे हैं वो सबसे बड़े भाई हैं। ओके, तो ये हमारी कार है जिससे हम जा रहे हैं। ये मेरी मम्मी और ये मेरी भतीजी। हाय कर दे, हाय। Just reached to Chitrkut. Okay, cool. So we are on the way to Goa, and we are few kilometers away from Chitradurga. We have stopped for exchanging the drivers over here. We have driven roughly around 170 or 180 kilometers so far. Yeah. चल भैया, बीच में जा रहा हूँ, ठीक है, आराम से। हाय, हम सड़कों पे भटक रहे हैं गोवा की, और राधा कर्नाटका की। हम लोग अभी गोवा के अंदर एंटर करने वाले हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं। 6 बजे से पहले हमें आना था वहाँ पे। आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ द प्लेस। दिस इज़ माई ब्रदर बाय द वे, जो मास्क में है अभी। ओके, तो आज रात होपफुली विल बी एबल टू मेक इट 8 बजे या फिर आई थिंक 9:30 तक हम लोग, एक्सपेक्टेड टाइम अकॉर्डिंग टू गूगल, गोवा पहुँचने का। This is the way. All right, so we have reached Goa. This is our day 1 at Goa, and I'm wearing my cap. Okay, so it's been a great drive. We came around 11 or 10 p.m. in the night, and now we are heading towards the Calangute beach. वहाँ पे मज़ा आएगा। आज शायद हम लोग वाटर राइड्स भी करेंगे,
like for example jet skiing and other rides. I don't know the names of the rides. और अभी हम हेड कर रहे हैं कैलनगेट बीच की तरफ, and then we'll be heading towards the Baga beach, and then after that towards the Vagata beach, and then Chupara Fort. It's been going great. We have had our dinner and the breakfast nearby. और होटल से बीच बहुत पास है, and we got it at a very affordable price. I think we are a little bit off season right now. That's why the rates are not that high. I think roughly 100 to 150 meters away from the beach. Right now I'm standing. और वो रहे मेरे भाई लोग जो अभी अनलोड कर रहे हैं कुछ सामान कार से. And then okay, we'll see you guys at the beach. Alright, we are here at the middle of Calangute and the Baga beach. और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है यार. I have to tell you guys, I don't know how many times I have visited ocean, but जब भी आते हैं यार मज़ा आता है. Every time you feel like this is the first time. And seriously, I don't know how to explain this. The sound, the feel, the vibe, it's all great. बहुत सही लगता है यार, बहुत मज़ा आता है. तो इसके बाद हम कैलनगेट बीच पहुँचे और वहाँ से हमने चलना शुरू किया टुवर्ड्स द बागा बीच. बागा बीच पहुँचने के बाद वही सेम दोनों बीच कनेक्टेड है. सो वी थॉट ऑफ मूविंग टू चुपारा फोर्ट बाय ट्रैकिंग. और ट्रैकिंग में हमें कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पे क्या जाना है, बट वी रैंडमली स्टार्टेड क्लाइंबिंग द माउंटेन. फिगर आउट दिस टापू restaurant which was really nice. We clicked some pictures over there. Finally we gave up. We thought of coming back to the beach and spending the evening over there only. तो हम लोगों ने वहाँ पे सनसेट देखा and then we did some activities, and उसके बाद we thought we were tired and we planned to have our dinner, and post having dinner we had this very nice tandoori chai, and after having that chai we called it a day.